Hello everyone. Today we'll understand concept of elasticity of supply, which is one of the topic of your paper 3 economic and business environment. This video will cover what elasticity of supply is, what are the types of elasticity of supply, what are the factors influencing the elasticity of supply, and another concept relating to supply is shifts in supply curve or increase or decrease in supply. So let's start. Elasticity of supply. First, we'll understand what elasticity of supply means. It is change in quantity supplied in response to change in price. As it is clear from the definition that the changes in quantity supplied in response to change in price of that particular commodity is called elasticity of supply. So अगर हम कहें कि हम किसी प्रोडक्ट का elasticity of supply मेजर कर रहे हैं तो हम क्या मेजर करेंगे उस कमोडिटी की सप्लाई में कितना चेंज हुआ है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस एंड सप्लाई को हम बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस ही अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि डिमांड में था देयर इज इनकम इलास्टिसिटी देयर इज क्रॉस इलास्टिसिटी देयर इज प्राइस इलास्टिसिटी बट इन केस ऑफ सप्लाई वी हैव ओनली अ सिंगल इलास्टिसिटी विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुआ है 30% इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस बाय 60%. So this is a statement denoting the elasticity of supply. इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is calculated as change in quantity supplied divided by original quantity, change in price divided by original price. जब हम इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. This graph also depicts the changes in quantity demanded in response to change in price and therefore an upward movement in supply curve. And this is the quantum of change in quantity supplied in response to change in price is called elasticity of supply. अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने तरह की होती है. So basically price elasticity of supply is of 5 types: perfectly elastic supply, perfectly inelastic supply, relatively high elastic supply, relatively less elastic supply and unitary elastic supply. तो सबसे पहले हम समझेंगे perfectly inelastic supply क्या होती है. जैसे कि नाम बता रहा है इन इलास्टिक सप्लाई मीन्स किसी भी कमोडिटी की सप्लाई उसके प्राइस से इररेलेवेंट है मतलब क्वांटिटी सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइसेस एंड इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी zero and supply curve will be parallel to y-axis because here the elasticity of supply is irresponsive. It's not at all responding to changes in price. अब सेकेंड तरह की इलास्टिसिटी पे आते हैं वो होती है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. ये टोटली ऑपोजिट है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. इसमें स्लाइट चेंज इन प्राइस भी बहुत ह्यूज इम्पैक्ट करता है क्वांटिटी सप्लाइड को. सो क्वांटिटी सप्लाइड इस केस में जीरो भी हो सकती है इवन इफ स्लाइट फॉल इन प्राइस and it can go to infinity even if slight rise in price. And in this case elasticity of supply is depicted by perfectly elastic supply curve which is parallel to x-axis. अब हम आते हैं relatively less elastic supply. इस केस में क्वांटिटी सप्लाइड का जो चेंज है वो हमेशा चेंज इन प्राइस से कम होगा और वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इस केस में हमेशा 1 से कम आएगी. क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स ऑफ सप्लाई मीन्स न्यूमरेटर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा एंड therefore elasticity of supply will be less than 1. So when we'll say the elasticity of supply of product X is less, it means उसका जब प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई बहुत कम चेंज होगी. It can be understood in the form of graph. Suppose if price 1 increases from P1 to P2, the price of the commodity changes in response to which quantity supply changes this much.
and it clearly shows the response of a quantity supplied. Change in quantity supplied to change in price is very less, and therefore we can say elasticity of supply of this product is less. Another type of elasticity is relatively greater elastic supply. In this case, change in supply is relatively more than change in price. So, a small change in price can cause a bigger change in supply. As shown in this graph, a small change in price makes a bigger change in quantity supply, and therefore, in this case, elasticity of supply will be greater than 1. So we can take an example of perishable commodity. If a commodity is perishable, in that scenario, even if there is huge change in price, their quantity supplied cannot be more elastic because perishable commodity can get perished and it cannot be stored for a longer period of time. So producer has no option but to supply a commodity even at lower prices. So if in case commodity is perishable, elasticity of supply will be less. And in case it is non-perishable commodity, elasticity of supply will be high because a slight reduction in price can cause producer to decide to stop supply and stock that particular product for sale in future when they can get a higher price of that commodity. So इस केस में नॉन पेरिशेबल कमोडिटी के केस में सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी हो जाएगी मोर इलास्टिक or unitary elastic supply. This is the type of elasticity in case supply of a commodity, change in supply of the commodity is exactly equal to change in price. And in this scenario, numerator is exactly equal to denominator, and therefore value of elasticity of supply will be 1. As shown in this graph, change in price and change in quantity supplied is equal. And यहाँ पर elasticity of supply की value 1 आएगी. अब हम समझते हैं what are the factors influencing elasticity of supply. So one of the main important factors जो किसी भी product की elasticity को impact करेगा वो है उसका price. So price of the commodity increase होगा जैसे कि हमने law of supply में पढ़ा था जैसे ही price increase होगा quantity supplied increase होगा price decrease होगा quantity supplied decrease होगा तो elasticity of supply we have understood is responsiveness of change in quantity supplied to the change in its price. So price is one of the main factors affecting the quantity supplied and therefore its elasticity. Another important factor is probability of change in price in future. So किसी भी प्रोड्यूसर का प्रेजेंट चेंज इन प्राइस पे रिस्पॉन्सिवनेस इम्पैक्ट करेगा उसकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस ऑफ प्राइस इन फ्यूचर. तो अगर वो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में और बढ़ेगा तो वो अपनी प्रेजेंट सप्लाई को कर्व करेगा. therefore his response to present change in demand, present change in price will be less, and therefore the उसकी elasticity of supply उस particular product की less elastic हो जाएगी आज की डेट पे. Another very important factor affecting the supply and therefore elasticity of supply is cost of factors of production. So cost of factors of production जैसे कि हमें पता है there are basically four cause factors of production: land, capital, labor and entrepreneurship. ये चारों फैक्टर्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जो एक प्रोड्यूसर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है. डिसीजन टू प्रोड्यूस मोर, डिसीजन टू सप्लाई मोर. Therefore अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड देयरफॉर क्वांटिटी सप्लाइड विल बी लेस. एंड सिमिलरली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होगा बिकॉज प्रोड्यूसर के पास मोर इंसेंटिव होगा उसको सप्लाई करने का बिकॉज देयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल बी मोर. And therefore, the cost of factors of production is one of the important ingredient or one of the important factor affecting the elasticity of supply. Another factor is nature of commodity. So as I have already explained, the perishable nature है किसी commodity का तो उसकी elasticity of supply कम होगी. अगर non perishable है उसकी elasticity of supply high होगी. So nature of product also influences the elasticity of supply. Length of time. Length of time is always influences the decision of producers to supply because more will be the time, more they have
tendency to adjust to the market situations, and therefore over a period of time elasticity of supply large हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, because उनका जो responsiveness है to change in price will be more because they tend to adjust to the market forces in long run. अब हम पढ़ते हैं shifts in supply curve. तो shifts supply curve पे कब होता है? Supply curve increase in price और decrease in price से क्या होता है? There will be movement along the supply curve. Entire supply curve कब change होता है? जब there is change in one of the determinants of supply other than price. For example, cost of factors of production. So supply curve shifts with a change in one or more of underlying determinants of supply except price. And underlying determinants जैसे कि हमने पढ़ा था are the cost of production, price of related commodity, prices of factors of production, prices of imports, changes in technology, weather conditions, government policies, and so on. सो इन फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई चेंज होती है तो उसे बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, एंड इन दैट केस द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट और राइट. सो एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर, change in cost of production, अगर cost बढ़ता है less can be produced at given price and supply curve will shift to left. Let's see how. Suppose किसी commodity का price P1 है and at same price quantity supplied is Q1, and because of change in price of factors of production quantity supplied become Q3 at same level of price, and this will cause a leftward shift when shifts in supply curve. So this impact came because of change in factors of production, not because change in price of the commodity. And therefore therefore it can be denoted as shifts in supply curve. So this was whole about elasticity of supply. Thank you so much. Start preparation and subscribe to my channel CS Ab Initio.